And welcome back to Are You Here for the Cricket brought to you by Dafa News। आप देख सकते हैं कि मैं हूं फिर से एक बार आपका होस्ट और दोस्त जेमी ऑल्टर इस लाइव स्ट्रीम पर जिसका नाम है कॉफी एंड क्रिकेट विद जेमी। तो इसी बात पर लेट्स गेट द स्ट्रीम स्टार्टेड विद अ सिप ऑफ कॉफी। कॉफी, आप, क्रिकेट और क्या चाहिए बंदे को आज का दिन। दोस्तों, it's the match which will decide, well, virtually guarantee one team a place in the semi-finals of the 2023 World Cup। आज का मुकाबला दोस्तों उन दो टीम्स के बीच होगा जो अब तक एक भी मैच नहीं हारे हैं इस टूर्नामेंट में। टॉप रैंक न्यूजीलैंड वर्सेस सेकंड प्लेस इंडिया। दोनों टीम्स अब तक चार मैच खेल चुके हैं और एक भी मैच नहीं हारे हैं। न्यूजीलैंड से शुरुआत करते तो हाउ दिस टीम हैज कोप्ड विद द स्पेट ऑफ इंजरीज इज कमेंडेबल। हम सब जानते हैं कि कोई भी आईसीसी इवेंट हो, खासकर वनडे वर्ल्ड कप्स, इसमें कोई भी टीम न्यूजीलैंड को हल्के में नहीं ले सकती। जहां टूर्नामेंट से पहले लग रहा था कि शायद ये टीम केन विलियमसन की इंजरी को लेकर स्ट्रगल करेगी, टिम साउदी की इंजरी को लेकर स्ट्रगल करेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बेशक केन विलियमसन एक मैच के लिए आए, अच्छी पारी खेली, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट वे टू गेट इंजर्ड, मतलब डीप से थ्रो आया और ठीक उसी अंगूठी पे लगी थी जहां पे चोट इनको पहले लगा है। बट look at it honestly, truly. Despite not having Kane Williamson, Tom Latham ने बेहतरीन कैप्टनसी करी इस टीम की with somewhat depleted resources. They have done fantastically. और केन विलियमसन की बैटिंग अब तक चार मैच में ज्यादा मिस नहीं किया न्यूजीलैंड ने। That said, New Zealand have not really been challenged in four matches yet. And we all know they are India's bogey team when it comes to ICC events। दोस्तों, आपको बता दूं कि वनडे इतिहास में, वनडे वर्ल्ड कप में, साथ में T20 वर्ल्ड कप में जो 2007 से शुरू हुआ था और फिर पिछले दो WTC टूर्नामेंट्स में 13 बार, 13 बार across formats when it comes to ICC events, add in the Champions Trophy there, 13 मुकाबला में केवल 3 बार भारतीय टीम जीत चुकी है न्यूजीलैंड से, ब्लैक कैप से। सो वी ऑल न्यू कि अक्टूबर 22, I was going to say November. Hello, long time to go. October 22nd in धर्मशाला ये मुकाबला इंडिया का पहला झटका वाला मुकाबला हो सकता है। That said, India are also just like the Black Caps. They are 4-0. The template of chasing has so far proven successful. लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि इंडिया की बोलर्स का योगदान बहुत बड़ा है ये चार जीत के पीछे। Yes, India look like a good chasing team, but the fact is they've not been put up a big total yet. Chasing 200 against Australia, chasing 192 against Pakistan, chasing 273 odd, and chasing 284 odd, 260 odd against Bangladesh. Yes, India have finished the job on all four occasions, but have they really, truly been tested? We all know ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या आज धर्मशाला में क्या होगा? Will New Zealand with Trent Bolt, Matt Henry, the same जोड़ी जो 2019 वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इतना भारी पड़े इंडियन टीम पे? Does Indian team missing Hardik Pandya, the Indian team who, like I said in the past three shows, needs to replace Hardik Pandya with Surya Kumar Yadav, the batsman, and Mohammad Shami, the bowler? Can this team get past this New Zealand team? ये बेहतरीन मुकाबला होने वाला है दोस्तों। अब तक जो 18-19 मैच हुए सारे के सारे वन साइडेड हो चुके हैं। क्या आज का मुकाबला वन साइडेड होगा? Will India finally get past New Zealand in a one-day World Cup, or will New Zealand take that massive step forward towards the semi-finals by defeating, as we all know, the favorites for this tournament? जो भी है दोस्तों, धर्मशाला, सीनिक धर्मशाला, अब तक वर्ल्ड कप में 33 विकेट्स have fallen to pace in धर्मशाला and 17 to spin। आज क्या होगा? कौन किस पे भारी पड़ेगा ये देखना बाकी है। दिल तो कहता है इंडिया, दिमाग इस बार भी कहता है इंडिया, बट कम वक्त ना जाने क्यों ब्लैक कैप्स का नाम देखकर वनडे वर्ल्ड कप्स में थोड़ी फिक्र होती है मुझे। लेट्स सी हाउ इट गोज, लेट्स गेट द डिस्कशन गोइंग। मैं आपका सवाल लूंगा, जो कुछ आपको पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं इन दिस लाइव स्ट्रीम फॉर द नेक्स्ट 20-25 मिनट्स। चलिए इसी बात पर let me take some of your questions. Where is my screen gone? One second here. Let me just quickly pop up this screen and then I'll get your questions going. मुझे लगता है आज बहुत बहुत सारे लोग मेरे साथ स्ट्रीम पर जुड़े होंगे। क्या बोलते हैं आप लोग? Who do we have? Who do we have? Who do we have? We have Manish Kene. Good morning. Good morning, Manish, to you. Kya Bumrah Siraj will create 5 for 3 any day? I hope that's coming soon.
क्या आज इंडिया जीतेगी? आई थिंक इंडिया आज जीत जाएगी, आज भी न्यूजीलैंड ही जीतेगा। जी भाई, चलिए जानू आपको लगता है। गुड मॉर्निंग श्रेयांश, heard about injury scare for Sky in the nets and a beasting for Ishan team if they are both not available। फिर तो भैया आपको अश्विन को खिलाना पड़ेगा, बहुत बहुत मुश्किल होगा। but let's not think negative, let's be positive। PS, my friend, I guess you missed the last two live streams. I have said Shardul out, Shami in, and Sky in। देखो देखो, सच्चाई ये है कि इस पूरे 11 में पिक अप एनी प्लेयर फ्रॉम इंडियाज 11 अपार्ट फ्रॉम हार्दिक पांड्या। इफ एनी प्लेयर, यानी कि अगर बाकी 10 प्लेयर्स में से कोई भी इंजर्ड हो जाता है तो आप एक प्लेयर को एक से रिप्लेस करते हो। लेकिन जहां हार्दिक पांड्या की बात है, इसकी प्रॉब्लम ये है टीम के लिए कि इफ हार्दिक पांड्या गोज आउट इन वर्ल्ड कप, you have to replace him with two players because he's a seam bowling proper all-rounder। He's not शार्दुल ठाकुर। और रोहित शर्मा भले ही कितने मैच में शार्दुल को खिलाए, जब शार्दुल ठाकुर है और हार्दिक पांड्या नहीं है, all your best laid plans go out the window। Now Rohit cannot depend, to my mind, on Shardul Thakur। Who is Rohit Sharma's best first change bowler? Who's his third pacer? ये खुद कह चुके हैं 2 बार रोहित शर्मा, वो है हार्दिक पांड्या। So when your third pacer is not around, your third pacer by default becomes Mohammad Shami, and your number 6, your second number 6 is not Ishan Kishan, it's Surya Kumar Yadav। तो आज वो रेयर केस है, एक ही मैच की बात है। एक हफ्ते बाद जरूर हार्दिक पांड्या आएंगे इंग्लैंड के सामने लखनऊ में। एक मैच के लिए इंडिया को 5 बॉलर्स खिलाकर भरोसा रखना पड़ेगा उन 5 पर। रिस्की है, but if you need 5 bowlers to give you 50 overs, I believe the 5th bowler should be Mohammad Shami, and you need someone capable of doing some fireworks at number 6, and to my mind, it is Surya Kumar Yadav। Third and fourth position, says Surya Vikram Singh, in this World Cup will be decided by net run rate। New Zealand to win today, valid point about net run rate, and let's see, it's going to be a cracking match। Jo bhi hai bhai log। Cricket, just a person called Cricket is saying Devon Conway is key cricket। I understand। जयप्रीत कह रहे सिंस धनी, ये धनी कौन है भाई? सिंस धनी कैन नॉट प्ले टुडे वी शुड गो फॉर सूर्य। भाई पहले ही जयप्रीत पाजी, ये धनी कौन है भाई? एम आई मिस रीडिंग इट? धनी, सिंस धनी क्या भाई? धोनी तो कब के हो गई, ये धोनी सोना, ये धनी कौन है? शायद इट्स अ टाइपो। एनीवे दोस्तों, लाइक आई सेड, द बोगी टीम, न्यूजीलैंड इज इंडियाज बोगी टीम्स। 13 बार इतिहास में 1975 से लेकर इस टूर्नामेंट तक इनका जो मुकाबला हो चुका है, 13 बार अक्रॉस फॉर्मेट्स, केवल आईसीसी इवेंट्स में इन दोनों टीम्स का मुकाबला हुआ है। और भैया 3 बार इंडिया जीती है और 10 बार न्यूजीलैंड जीती है। बड़ी 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 वन साइडेड राइवलरी है ये। बट आई थिंक इंडिया, आई मीन, I'm not always so positive when it comes to India's best laid plans in the last year, as you can see by watching these shows। लेकिन मुझे लगता है आज, despite Hardik Pandya not being here, I think India's got this match। पता नहीं, feel आ रही है। Kiran Mandari, welcome back। India should lose at least 2 matches in league stage। Should lose to मैं नहीं कहूंगा, because you never know, one loss can really offset a team's combination। I don't see them actually losing more than one। It's either going to be this match or it's going to be the match against South Africa at Eden Gardens, Kiran, on the 5th of November। ये टीम इंग्लैंड से नहीं हारेगी। इंग्लैंड का तो पत्ता कट चुका है इस वर्ल्ड कप में, obviously। They're not going to lose to anybody else। ये मैच या फिर साउथ अफ्रीका मैच, I don't see them losing both। Just a gut feel, India will probably lose one match and will go into the knockouts with 8 of 9 wins। जी भाई, आज स्काई को खिला लो, मैच में इतना बड़ा प्लेयर बाहर अच्छा नहीं लगता। भाई मैं तो कह रहा हूं, जब से हार्दिक पांड्या को चोट लगी 3 दिन पहले, मैं कह रहा हूं एक ही सोल्यूशन है, आपको एक बैट्समैन और एक बॉलर दोनों को रिप्लेस करना है। इसीलिए आपको शामी और स्काई को खिलाना पड़ेगा। वुड यू स्वैप साउथ अफ्रीका फॉर इंग्लैंड इन योर टॉप 4 नाउ? श्रेयांश, I have no option but to, because look, England are virtually out। They're not out yet। 4 साल पहले in the 2019 World Cup, which they won, they also lost 3 matches। लेकिन वो एक अलग टीम थी, अलग दौर था, अलग कंडीशंस थे। Right now, this misfiring, broken England team, I mean, how is there anyone on this live stream watching right now जिनको लगता है कि अभी भी टीम्स को चेस करना चाहिए? मतलब मैं इतना हैरान हूं कि इतने डड्डू कैप्टन इस वर्ल्ड कप में, बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने इतनी घटिया बॉलिंग के साथ
चेस करने का फैसला लिया कि ड्यू आएगा। 19 मैच हो चुके हैं, केवल 2 मैच को छोड़कर कहीं ड्यू हुआ है? व्हाई द हेल आर कैप्टन्स टॉकिंग अबाउट दिस फिनोमेनन कॉल्ड ड्यू? कहां है ड्यू? 19 मैच हो चुके हैं, ड्यू कहां है? बाबर आजम को लगा कि बैंगलोर में ड्यू होगा, उन्होंने उस घटिया फील्डिंग के बॉलिंग अटैक के साथ फील्ड करने का निर्णय लिया। क्या टीम को फेंटे लगाए ऑस्ट्रेलिया ने? कल जॉस बटलर, मुझे लगा शायद मुंबई में ड्यू होगा। इफ यू हैव द बॉलिंग, सिंपल सी बात है, मैं आप लोग से पूछता हूं क्योंकि मैं बहुत, यू सी ऑन माय फेस, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं ये देखकर कि टीम्स चेस कर रहे हैं। अगर आपके बॉलर्स 400, 375, 350 रन दे सकते हैं हर मैच में, तो क्यों आप लोग फील्डिंग कर रहे हो? बैटिंग ले लो, ट्राई टू पुट द ऑपोजिशन टीम। आपको पता है कि भाई जॉस बटलर नो कि हम ये मैच हार रहे हैं, बाबर को मालूम था हम ये मैच हार रहे हैं, तो चलो बॉलिंग करते हैं, हो सके थोड़ी वर्कआउट हो गई। इट कैन बी द ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। जॉस बटलर chose to field on one of the hottest October afternoons with a rejigged bowling attack. You're playing two fast bowlers for the first time in the World Cup, and you choose to field at the Wankhede against that South African, the best top 6 in the World Cup. अंधे बहरे को पता है कि भाई वो टीम 400 मारेगी, और फिर आप साला 150 barely क्रॉस कर चुकी हो। Why your teams chasing? It's so stupid, man. Anyways, should India bat first? Shashank, India have to bat first. ये पहले भी कह चुका हूं, रोहित cannot, this team might go into the knockouts, like I said, 8 out of 9, हो सके 9 out of 9, but your template cannot be across 9 matches to chase. Yes, आपके bowlers बेहतरीन हैं, चारों जीत में bowlers ने मैच जिताया, बैट्समैन ने नहीं। अगर बैट्समैन ने काम खत्म किया, it's because the bowlers set you targets of 199, 192, 200, 267 and 273. The day the target is 330, 340, देखना ये टीम चेस नहीं कर पाई। इंडिया अब तक अनबीटन है because of the bowlers largely, right? Because India have a bowling attack that can get the job done, but that doesn't mean कि यूं से कि हम हर मैच में चेस करेंगे। कम से कम 9 में से कम 3 बार अगर जो आप टॉस जीते हो, आप बैट करो, बैट्समैन को बैक करो, आपके पास बेहतरीन टॉप 6 है, आप बैक करो, आप दूसरी टीम को स्कोर कार्ड प्रेशर में डालो। अब तक इंडिया स्कोर कार्ड प्रेशर और स्ट्राइक रेट प्रेशर, प्लीज आप जो ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, आप प्लीज अंतर समझिए स्कोर कार्ड प्रेशर or strike rate pressure पर। India were put under scorecard pressure in the first match when they slipped for 2 for 3, but the target was only 200. They could recover. Now notice the difference between scorecard pressure and strike rate pressure. कितनी बार पिछले 2 साल में, 3 साल में, T20 वर्ल्ड कप्स में, अलग अलग टूर्नामेंट्स में इंडिया के बैट्समैन स्ट्राइक रेट प्रेशर के शिकार बन गए। India have not been put under strike rate pressure in 4 matches left. So let's keep the option कि इंडिया के पास वो काबिलियत है कि वो स्कोर कार्ड प्रेशर और स्ट्राइक रेट प्रेशर को पार करके और भी बड़े टारगेट्स चेस कर पाए, 300 टारगेट चेस कर पाए, 320 टारगेट चेस कर पाए अगर जो नौबत आई। But let's also not discount the importance of batting first. You need your team in 2 mentalities going into the semifinals. One, हम कुछ भी चेस कर सकते हैं, और दूसरा हम कुछ भी सेट कर सकते हैं। अब तक 4 मैच में इंडिया कोई टारगेट सेट नहीं कर पाई है। दैट्स व्हाट आई वांट टू सी। आई वुड लव फॉर रोहित आज और अगले 2 मैच में अगर टॉस जीते बैटिंग कर ले। सिराज, बुमराह, शामी एंड ठाकुर should take New Zealand. I don't think 4 bowlers, 4 pacers are going to play today, my friend. Hey Chirag, I saw your podcast with Wajat. He's obviously being political enthusiast, said crowd misbehave, but things happen in these large games. But you take game football or rugby. I know, I understand where he was coming from, but like I was saying, you know, एक बंदा इंडिया आकर ग्रीन जर्सी पहनकर पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? अगर एक इंडियन पाकिस्तान के मैच में ब्लू जर्सी वहां पहनकर हिंदुस्तान जीतेगा बोलेगा, तो कोई ना कोई एतराज होगा ना। सो आई एम नॉट गोना पे टू मच अटेंशन टू ऑल दिस टॉक of politics and all. यार छोड़ो, आगे बढ़ो। PS, India, New Zealand, South Africa should qualify. Who would qualify as 4th team? Australia, hands down, Australia. What's causing this England's downfall? To my mind, a reluctance to acknowledge that the team of 2019 is not the same. Not keeping Jason Roy, having someone like Joe Root batting at 3. I know he's scoring runs, but you need someone faster. You've got to play more free stroking batsmen. Some bad decisions like yesterday choosing to field
Chris Wokes has not showed up. That's a massive loss. Sam Curran has not showed up. They're just not playing the aggressive kind of cricket we expect. Go back to that loss at the Arun Jaitley Stadium last Sunday. I was at the stadium. England kept losing wickets, but to my mind, they were not losing wickets like the. I'm not going to say baseball because that's for Test cricket, but they were not losing wickets in their attempt to go big. They were playing defensive shots. They seem confused. So it's clearly, despite having a good team on paper, it's clearly a team just creaking under a lot of players not scoring runs. Joss Butler's not scoring runs. Johnny Bairstow's not doing anything. It's a combination of out of form players, the wrong mentality, and probably some injuries. इंग्लैंड अब फिर से पुरानी इंग्लैंड बन गई है बिल्कुल 2011-15 बिल्कुल सही बात कह रहे हो इंडिया इज प्लेइंग सो वेल व्हाई एम आई स्केयर्ड आई डोंट नो व्हाई आर यू स्केयर्ड India, SA, and NZ3 unlucky team in semifinals. It will ensure at least one of them will win the World Cup. Let's hope. Morgan said loud and clear for this match that England did a blunder by dropping one. Bilkul, मैं वही कह रहा हूँ. They're missing Roy. Today will be the real challenge. Bilkul. Do you think Shardul is the weak link? Absolutely, he's the weak link. He's only playing because Zoe Sharma likes him. But Shardul can play because the Hardik Pandya factor is so big. अब जब Hardik Pandya नहीं है, तो कैसे आप Shardul को खिलाओगे? Totally agree, Jamie. We should bat first. Our batsmen have not been tested. That's it, Shashank. Everyone knows India's batting has not been tested. So, bat first. While chasing India's middle order still is. Exactly. Hardik Pandya has batted once. He barely faced 6-7 deliveries. Jaddu's not batted. India's batting in this whole World Cup has not moved beyond number 5. 6 or 7 को batting करनी पड़ेगी और शायद बल्कि मुझे लगता है जरूर वो दिन आज होगा. So yes, India faced their bogey team, New Zealand. India cannot afford to lose any game. Going to be tight. Bilkul, bilkul. India. I understand when Kiran says that India should lose, but I think should is the wrong word. India should not lose a single match. Yes, you want to be put under immense pressure. जो अब तक 4 मैच में नहीं हुआ. ना न्यूजीलैंड अब तक immense pressure पे आ चुकी है. ना इंडियन टीम अब तक immense pressure पे आ चुकी है. तो आज hopefully एक contest के लिहाज से forget our loyalty, forget where our fan base lies. I'm saying 19-20 मैच. आज कौन सा मैच है? आज 20वां मैच है कि 21वां मैच है? आज 21वां मैच है दोस्तों 20 मैच हो चुके हैं इस वर्ल्ड कप में एक भी मामला टाइट नहीं था कैन यू वाचिंग दिस शो कैन यू डिसएग्री विथ मी हैव यू सीन वन क्लोज मैच इन 20 मैचेस yes there were two fantastic upsets but in those upsets the margin of defeat was far from close it was one sided Afghanistan smashed England in a one-sided 69 runs. That's one-sided. Netherlands beats South Africa. That's one-sided. 20 मुकाबले में अब तक वो करीबी मामला क्यों नहीं आ रहा है? Where are the 5-run wins? Where are the 15-run wins? Where are the 4-wicket wins? Where are the 3-wicket wins? We're seeing 9-wicket wins, 8-wicket wins, 7-wicket wins, 6-wicket wins. We're seeing 134-run wins, 149 wins. Where are the close matches? 20 match हो चुके हैं. Where are the close matches that give the fans their entertainment worth? I'll tell you why. A, conditions just do not encourage such matches, right? They're still largely high-scoring tracks, a few up and down tracks. But इससे बड़ी बात, it's the quality of teams. You call yourself a one-day World Cup, a global sport. आपके पास 10 teams हैं, ठीक है? जिनमें से एक, no disrespect, एक टीम 15 रैंक टीम है, वो एसोसिएट नेशन से आई. वेस्ट इंडीज ना आई. किसी को no one's missing them. श्रीलंका are so bad, they're not worth it. 10 टीम में से आपके पास केवल 5 टीम्स हैं जो अच्छी क्रिकेट खेल सकती है. I'm putting England in that 5, लेकिन वो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही है. पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही है. अफगानिस्तान एक मैच को छोड़ के अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही है. बांग्लादेश एक मैच को छोड़ के अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही है. तो जब एक ग्लोबल टूर्नामेंट में केवल 10 ही टीम्स हैं और उन 10 टीम में से केवल 5 टीम्स अच्छी क्रिकेट खेल रही है तो जाहिर सी बात है कि टॉप 4 तो आपके वैसे ही सेट है, राइट? England, to my mind, were the top 4, but now they're playing such bad cricket, and South Africa are playing pretty decent cricket that now South Africa are number 4. So if you can call the semi-finalists in the first 10 days of a World Cup, what's the point of all this? Where is the one-day format going? अब आप बोलेंगे भाई आप बहुत cynical हो, आप बहुत negative हो. भाई नहीं, I genuinely have a concern about the future of one-day cricket. Should we just have a World Cup with just 6 teams going forward? जब 5 टीम्स अच्छी क्रिकेट खेल सकती हैं और 5 नहीं, तो ये फायदा क्या है? आप कहते हो कि 16 टीम्स बनाएं, अगले वर्ल्ड कप में 14 टीम्स होंगे. वो 14 टीम्स वो
एक्स्ट्रा 4 टीम्स यही तो होंगे. They're going to be associate level teams who, barring ikka tukka match, are going to get smashed by the big teams. So you're looking at a World Cup where the semi-finalists, barring one team, are pretty much decided before. There were some viewers on this channel who had Bangladesh, Sri Lanka in their top four. आप लोग किस लेवल के क्रिकेट देख रहे हो? आप लोग कौन से क्रिकेट देख रहे हो भाई लोगों? जो बांग्लादेश और एक बंदे ने अफगानिस्तान को डाला टॉप 4 में. भाई कौन सा भांग पी के आए हो? सबको पता है इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इन 5 में से 4 टीम जाएंगे. पाकिस्तान का हरगिज कोई चांस नहीं था. श्रीलंका का घंटा चांस था. अफगानिस्तान का घंटा चांस था. बांग्लादेश का घंटा चांस था. नेदरलैंड्स का घंटा चांस था. देयर आर ओनली 5 टीम्स कंपीटिंग and the fifth one is so bad, England, कि अब तो उनका भी चांस नहीं है. So I really worry, my friends, about the future of one-day cricket. विल यंग कितना स्कोर करेगा भाई? मेरे भले से बंदा आउट हो जाए डक पे, बट he looks good. पता नहीं 35-40. I meant India should lose so that our bad one day won't occur. नहीं किरण, मैं I get your point, but that bad day वो किसी के हाथ में नहीं है. India have had bad days before in the league stages, but the second bad day comes. इंडिया के साथ वर्ल्ड कप में एक नहीं 2 bad days तो होते हैं. Today's winner will make it 9 out of 9. Very interesting, but yes, possible. Shubhankar keh rahe, I think Surya and Ashwin will be Ashwin, but 3, I know left-handed, but 3 spinners in Dharamsala. I have my doubts, my friend. चैंपियंस ट्रॉफी इज बेटर देन वर्ल्ड कप. भाई फाइनली कोई मेरी बात से सहमत है. मैं तो कह चुका हूं कितने वीडियोस में, चैंपियंस ट्रॉफी को हर 2 साल कर लो. 10 के 10 टीम्स रखो, 8 टीम्स कर दो भाई, 8 टीम्स कर दो और फटाफट डबल हेडर करके इसको 3 हफ्ते में निपटा दो. I think the teams are losing hope too early rather than giving a fight. It's like upset in batting and bowling, falling over in bowling. It's about mentality. Bilkul, it's about mentality. Cricket, how can England drop Ali and Livy? Balance naam ki cheez bhi hoti hai. Bilkul, it's just it's panic, it's overconfidence, it's wrong selection. It's just too many misfiring players. Where is Josh Butler? आप क्या कर रहे हो? आप तो mentally check in ही नहीं कर पाए हो इस टूर्नामेंट में. टॉस पे गलत डिसीजन, फील्ड पे अजीबोगरीब फील्ड चेंजिंग्स, बैटिंग आपसे होती नहीं. It's just too many players not firing, my friends. Anyways, I've got to get ready for my 11:30 show. See me at 11:30 on Reposo. See me at 1 o'clock on News 9. Catch me in the innings break on Cricket Next. Sorry, post-match break and somewhere else. I've got too much going on today. But chaliye, last couple questions. Wrong Mon keh raha hai, I want India to lose and be cautious. I get your concern with the trend of losing in knockouts. Bilkul. But that doesn't mean ke ek loss. India could go in losing 2 of the next 5 matches. They could go in 9-0. But how do you prepare for that one bad match? Does it necessarily mean कि यहाँ एक तो मैच हार के you'll become mentally tougher in the knockouts? नहीं भैया, मैं कहता हूँ 9-0 जाके सेमीफाइनल्स पे एंटर करो. उस दिन आप क्या करोगे? 5 teams are competing. Remaining 5 team comes to eliminate one team out of top 5 teams by upsetting in one game here and there. ठीक है, but you still, yes, England were upset. Yet, yes, Netherlands were upset. But both these teams could technically be there, right? If Australia start to lose. I love upsets, but उनसे क्या होगा भाई? मजा आता है एक दिन के लिए. करीबी मुकाबला कहाँ है? India should encourage more nations by developing infrastructure in them. They should, bilkul, but will they? No. Look how we played Sri Lanka during 90s. Correct. I agree. But Sri Lanka, it was very evident from the first time they played Test cricket in the early 80s कि इनके पास कुछ level of players थे. बाकी टीम में नहीं है. सर आप किस टीवी चैनल के लिए काम करते हो? मैं फ्रीलांसर हूँ भाई. मैं बहुत लोग के लिए काम करता हूँ. मैं डाफा न्यूज के लिए शोज करता हूँ. मैं नव भारत टाइम्स के लिए शोज करता हूँ. मैं टीवी 9 के लिए शोज करता हूँ. मैं नेटवर्क 18 के लिए शोज करता हूँ. मैं फ्रीलांसर हूँ. मैं 18 साल तक मैं कॉर्पोरेट मीडिया में था और फिर लॉकडाउन के समय मैंने छोड़कर मैंने यूट्यूब खोला और अब मैं यूट्यूब चैनल द्वारा अलग अलग न्यूज चैनल पे आता हूँ. पाकिस्तान हैज रिवाइव्ड द वुंडेड बीस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज गोइंग टू hurt everyone. I'm telling you, Australia, you cannot rule them out. How do you watch on Reposo? Reposo is an app. It's an app for Android. It's an app for Apple users. Just download it. Free है. Free account बनाओ. ROPOSO. मैं हर दिन वहाँ पे 2 live podcast करता हूँ. I think India is a better team when it comes to 50 overs and test. बिल्कुल. I've been saying this for the whole, in fact, since last year, my friend. India's T20 team is broken despite being ranked number 1. It needs changes, and I think those changes will start to show over the next year. The test team needs help, but it's in the one-day format where they're so good still.
इंग्लैंड ने क्या किया भैया? इंग्लैंड ने कुछ नहीं किया मोनू, इंग्लैंड ने कुछ नहीं किया। चिन्मय जैन, फेक इन इंडिया। भाई आपने मेरा वीडियो नहीं देखा? मैंने अपने चैनल पर 2 महीने पहले पूरा डिटेल बताया था कि क्यों मैं फेक इन इंडिया में आजकल नहीं हूं। अपार्ट फ्रॉम हियर वेयर एल्स कैन आई सी यू? ओहो, आई हैव टू पुट अ वीडियो अप। एक second, just for you guys, let me put up this video. 1 second, दोस्तों. I guess a lot of you have not been following my streams when I mention every day कि मैं कहाँ कहाँ आने वाला हूँ. So I'll put up a video for you guys, just for you all, just for you all. About a month ago, I put up ये ले, just for you guys. Just for you guys, I put up this video before the Asia Cup started saying where I'm going to be across the Asia Cup and the World Cup. आप लोग प्लीज ये लिंक देखिए। इस लिंक में मैंने खास आप लोग के लिए, आप प्यारे दर्शकों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि एशिया कप की शुरुआत से वर्ल्ड कप के एंड तक आप मुझे कौन कौन से 4-5 प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हो। ठीक है, रुक जाओ, सेमीफाइनल आ रहा है, मतलब इंडिया का होने वाला है पैकअप। अनफॉर्चुनेटली वही वही मैच है जो सबको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन में डाल देता है ना। एनीवेज, आई गॉट टू गो, लव यू ऑल, लेट्स होप इंडिया विन। चकते फट्टे, जय हिंद। मैं आपसे मिलूंगा इसी लाइव स्ट्रीम पर मैच के बाद आज रात को। कम बैक एंड सी मी एंड आई पिंग द लिंक वेयर यू कैन कैच मी ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। टेक केयर, जय हिंद।